हेलो डियर फ्रेंड्स, बिजनेस हेल्पलाइन चैनल को आपण मन को बहुत बहुत स्वागत। आज आम देखा तरुण गोयल बुक रो फिजिक्स विषय देखा आज जोटा कि प्राय बुक रे जहाँ अच्छी तार कि समरी आम देखा प्राय परीक्षा रे संपूर्ण सारांश जो आम डिस्कसन कर प्राय देखिए आप परीक्षा से भाया क्वेश्चन पड़ो। चलते स्टार्ट करें। अच्छा देखो मोशन मोशन कौन मोशन is the change in position of a body with respect to a reference point over time. There are different types of motion such as linear motion, curvilinear motion and rotatory motion. Okay. अच्छा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी कौन था तार स्केलर क्वांटिटी कौन दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज that are completely described by their magnitude जोटा कि साइज कहउछंदी only and do not require direction. Example कौन length or distance, mass, time, area, volume, work, power, energy, temperature, speed, pressure, charge and potential एवढा आपण मन रखिया पड़िबो। वेक्टर क्वांटिटी को माने these are physical quantities that require both magnitude and direction to be fully described. Examples कौन displacement, velocity, acceleration, force, weight, momentum, electric field and torque. Note these कौन moment of inertia, refractive index and stress are tensor quantities which require multiple directions and components to be described fully. Okay. डिस्टेंस कौन ये सब क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन पड़े डिस्टेंस फॉर्मूला कौन एटा स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी एटा सब डायरेक्ट क्वेश्चन पड़े। ओके डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ ए पाथ ट्रैवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी regardless of the direction. It is a scalar quantity and has one magnitude. Displacement called displacement is the shortest distance between the initial and final position of a moving body along with the direction. It is a vector quantity as it has both magnitude and direction. Speed कौन speed is the scalar form of velocity. It is defined as the distance traveled in 1 second. If a body covers a distance d in time t, then speed is equal to v is equal to d by t, distance by time. Okay. ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ବିଜନେସ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଡେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହିର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି OPSC ଏସ୍ଓ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ତାର ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇ ବୁକ୍ ଦରକାର ଆପଣ ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିପାରିବେ କ'ଣ ଫିଚର୍ସ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏଠି QR କୋଡ଼୍ ସ୍କାନ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଇ ବୁକ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆଉ OPSC ଏସ୍ଓର ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି तार भी आप लिंक दरकार आप कमेंट सेक्शन पाइबे ना QR कोड स्कान करेंगे। OSSS एनी एग्जाम आप इ बुक अच्छी आप QR कोड स्कान कर नहीं पारे। OSSC CGL जो बुक्स अवेलेबल अच्छी लेटेस्ट सिलेबस ताको भी आप QR कोड स्कान कर नहीं पारे। वेरिएबल स्पीड एटा टिक इंपोर्टेंट बेला बेला गोटे गोटे परीक्षा पढ़ुची मे बी TCS बहुत थर पड़े। इफ ए बॉडी covers unequal distance in equal interval of times, it is said to have variable speed. Acceleration is always present when the speed or velocity of a body is variable. मुझ पहले uniform speed. A body is said to have uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time. The acceleration may or may not be present during the uniform speed. For example, if the uniform circular motion speed is constant but direction changes continuously, therefore velocity is variable and acceleration present due to the changing direction. Average speed average speed of a body is the distance travel divided by the total time taken. Formula average speed is equal to total distance by total time. Okay. Velocity कौन कहूँ ना velocity is defined as the rate of change of displacement with the time. Okay, if s is the displacement and t is the time, then v is equal to velocity is equal to s upon t.
ओके वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी बहुत प्रकार पड़े इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी पड़े वेलोसिटी कौन कौन हो पारे पॉजिटिव हो पारे नेगेटिव हो पारे जीरो पे डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द displacement. Okay, next uniform velocity. A body is said to have a uniform velocity when it covers equal distance in equal interval of time. In this case, the acceleration is absent because the initial velocity is equal to the final velocity. Both the magnitude and direction of the velocity remains constant throughout the motion. Variable velocity. A body is said to be variable velocity when it covers unequal displacement in equal interval of time. In this type of motion, acceleration is necessarily present. The velocity may change in magnitude, direction, or both over the time. Example, in uniform circular motion, although the speed, magnitude of velocity remains constant, the direction changes continuously, making the velocity variable. Okay. आपण मैंने टिके यूट्यूब चैनल आपण मैंने बिजनेस को लाइक से सब्सक्राइब कर दिंतु आपण को ई बुक दरकार ओपीएससीएस क्यूआर कोड स्कान करेंगे आपण स्मार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन दरकार क्यूआर कोड स्कान करेंगे ओ ट्रिपल एस एस एनी एग्जाम आसू क्यूआर कोड स्कान करके बुक नहीं पारे ओ एसएससी सीजीएल जेकोसी एग्जाम आपणकर हो सीजीएल हो सीएचएसएल हो स्टेनो हो लाटेस्ट सिलेबस जोड़ा अच्छी भी बुक अच्छी आप क्यूआर कोड स्कान कर पारे ना आपण मैंने मो कमेंट सेक्शन में लिंक देदेवे आपण क्लिक करके डाउनलोड करेंगे ओके आज वीडियो कैन लगे निश्चय लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू सो मच।